Welcome students to 12th standard. We have already started with the principles of management in our Google Meet online lectures. Today we are going to briefly discuss or revise whatever we have discussed so that you can always remember, and of course you can use the slides for your notes. Okay? So all the important points have been covered, so you can use it. Principles, maybe we saw what is principle. We have already done all this, so I'm going a little fast. So where there is a goal, you require management. जहाँ goal है वहाँ management का ज़रूरत है. In order to achieve the goal successfully, we follow certain universally accepted system or method, which is nothing but the principles. Okay? तो goal achieve करने के लिए हमें principles का ज़रूरत पड़ता है. Okay? Principle क्या है? They are truth that is accepted and believed to help managers to manage well and achieve the goals. ठीक है? यहाँ प्रिंसिपल लॉस ये सब एक ही है. यू हैव आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन साइंस. ओके, ठीक वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं. ओके, वी आर मूविंग टू हेनरी फयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. एज वी हैव ऑलरेडी लुक्ड इनटू, ही इज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर. ही मेड थ्योरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने थ्योरी बनाया है. ही हैज़ रिटन a book named General and Industrial Administration जिसमें 14 principles पाए जाते हैं. And we have already seen he is the father of modern management. So all these things, as I have already told you, will be used. It might come as objectives. Okay, so you should know all these portion well. Moving to the principles, there are 14 principles. Today we are going to see 7 of them. Principle of division of work. So what is division of work? It is allocation of responsibility to the employees depending upon their capabilities, qualification, interest. Okay? Work can be divided into various categories: financial, technical, commercial, managerial. These are the different areas of work in an organization. ठीक है, उसमें भी एम्प्लॉयज़ को असाइन किया जाता है उनका कैपेबिलिटी, उनका इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन देख के. वही काम को रिपीटेडली कर करके उनका एफिशिएंसी और वो काम में एक्सपर्टिस बढ़ जाता है. रेपुटेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टिस. ओके, एंड इसकी वजह से कंपनी का प्रोडक्टिविटी गेट्स इंक्रीज्ड. ओके, सो दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी लेवल इन द कंपनी. कितने एफिशिएंट लोग हैं, कितने एक्सपर्ट्स हैं अपने काम में, उतना कंपनी को बेनिफिट होने वाला है, उसका प्रोडक्टिविटी में उसका असर आपको दिखने वाला है. Okay, so principle of division of work is very important in all kinds of organization. सबको अपना अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now what is authority? It's the right to take the decision. What is responsibility? Is the work assigned that you are responsible to finish using the authority. तो आपको जो काम दिया गया है वो अथॉरिटी के हेल्प से आपको वो ख़त्म करना है. Now authority and responsibility should be equally balanced. दोनों में बैलेंस चाहिए. ओके, ना कम ना ज़्यादा. If authority is more than responsibility, मैनेजर क्या करेगा उसको? He will misuse it. Authority should never be more than responsibility. There should be balance between the two. If the responsibility is more than the authority, then manager will be frustrated. अगर काम ज़्यादा है और उसको करने के लिए authority power कम है, तो person will be frustrated. Okay, so ideally what Fayol says that there should be balance between authority and responsibility so that a person can do his job well. Okay, next we have come to principle of discipline. As we have already seen, it is the rules and regulations of any organization which the employees must obey strictly. It helps to achieve the goals of the organization. अगर आप rules and regulations discipline follow करते हैं तो goals organization के achievable हो जाएंगे. It is a result of effective leadership. Okay, so effective leadership, the leader should be disciplined himself as the discipline flows downwards. ठीक है, clear understanding between the management
and employees regarding the rules. There should be clear understanding about what the rules and regulations are, what the organization expects out of the employees. Okay, so disciplined superiors at all levels. तो as we have already seen, discipline जो है वो सबको ज़रूरी है. ओके, खास करके जो टॉप में है उनको. ठीक है, अगर टॉप के लोग डिसिप्लिन रहेंगे तो वो नीचे के तरफ, नीचे के लोग उनको सीखेंगे. दे विल ऑल्सो बी डिसिप्लिन्ड. ओके, इफ द टॉप मोस्ट or top level managers are disciplined, it will motivate the middle level and the lower level to be disciplined too. तो discipline हर level में चाहिए. Okay, it is just not for one particular level. Next is judicious use of penalties. What do you mean by this? Rules and regulations अगर follow नहीं हुए तो उसके लिए पेनल्टी होता है. पेनल्टी मतलब क्या है? पनिशमेंट. ओके, तो अगर पनिशमेंट का सही से इस्तेमाल होगा तो एम्प्लॉयज़ पनिशमेंट के डर से अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे. तो पेनल्टीज़ का जुडिशियस यूज़ होना चाहिए. ओके, उसमें आप स्ट्रिक्ट रहोगे पनिशमेंट में तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल बी डिसिप्लिन्ड. ओके, सो दिस इज अबाउट डिसिप्लिन. Principle of unity of command. This is only when one person is concerned. Employee should receive order from one superior. Employee will be confused if he receives order from more than one superior. एक superior से ज़्यादा अगर है तो employee को वो confusion हो जाएगा. Therefore, he should receive order from only one superior, that to the immediate boss. Therefore, organization hierarchy should be defined as we have discussed in the lecture. Hierarchy, okay, किसके ऊपर कौन है तो हमें immediate boss से ही order मिलना चाहिए. Every employee should know his immediate superior and receive orders from him only. ठीक है, और reporting भी employee वही superior को जाके देगा. So this is principle of unity of command, where we are talking about one employee. And whom should he receive orders from? He should receive orders from only one person, one superior. That too is immediate boss in the organizational hierarchy. Next comes to principle of unity of direction. This I have reduced it in one point. We have already discussed. Unity of direction कभी हम लोग देखते हैं जब एक group है. Okay, so when a group which is having a similar objective, okay, then that group should be directed by one manager using single plan. ठीक है, अगर एक ग्रुप है जिसका एक ही मकसद है, एक ही गोल है ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ग्रुप को अलग अलग प्लान, अलग अलग मैनेजर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलना चाहिए. दे शुड ऑल रिसीव और दे शुड बी डायरेक्टेड बाय ओनली वन मैनेजर एंड दैट टू यूजिंग अ सिंगल प्लान. So that is principle of unity of direction. Again I repeat, principle of unity of command में one person. Principle of unity of direction, group of persons having a similar objective. ठीक है. Next we go to principle of subordination of individual interest to organizational interest. यहाँ अपना खुद का इंटरेस्ट को सबॉर्डिनेट करते हुए हर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर प्रायोरिटी देके उसके हित में काम करना चाहिए. So interest of the individual should be given less importance than the interest of the organization. Employee should protect the interest of the organization. His personal interest should be subordinated. खुद का इंटरेस्ट को सबॉर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए. A player should play in the best interest of the team rather than for making individual records. Yes, so क्रिकेट का गेम में a person should think of winning. Okay, टीम का विनिंग के बारे में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा प्रायोरिटी रहना चाहिए. ओके, ना कि उसका पर्सनल रिकॉर्ड्स करने के लिए. ठीक है. सो Fayol says that once the organizational interest is achieved, the personal interest or individual interest is automatically satisfied. Okay, so this is what we discussed. The seventh is principle of centralization. It refers to concentration of powers and authority.
ओके, ऑपोजिट सेंट्रलाइजेशन का क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, now example of extreme centralization and extreme decentralization. We had taken an example of a college or a school, okay, where all the decisions are taken by the principal. That is the case of extreme centralization. Or all the decisions are taken by the teachers. That is the case of extreme decentralization. Okay, दोनों ही नहीं होना चाहिए. There is centralization in small organization like sole trading concern. अगर छोटा है यूनिट, ओके, तो सेंट्रलाइजेशन चलता है. लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस चाहिए. Okay, there should be balance between centralization and decentralization, especially in a large organization. So what is concentration? Centralization is concentration of power and authority. Decentralization में आप थोड़ा पावर्स बाकी लोगों को भी देते हो. ओके, तो एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अवॉइडेड. बैलेंस रखना चाहिए दोनों में, खास करके जब यूनिट या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, लार्ज स्केल में हो, तो आपको सेंट्रलाइजेशन नहीं चलेगा, तब थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन भी लगेगा. ओके, so there should be proper balance between centralization and decentralization. You can write these points for homework. You've already been given homework, so this was a revision lecture for you. Okay, that's all for today. Thank you.